Hello everyone, my name is Priyanka. Welcome to today's decoding session of the Hindu 12th of July 2023. From today's editorial, we will be discussing only three important topics. As in today's newspaper, most of the news and the editorials are repetitive, which we had already discussed in our previous videos. For example, the Uniform Civil Code. There is an article that the politics behind the Uniform Civil Code, right? And also about the Paxico versus the farmers' state. So we had done that too. Therefore, we have decided to discuss these three important topics. One is the demographic transition and change in the women's life. See, even this editorial was discussed in yesterday's newspaper. But why we are repeating it today? Because there is a new dimension added in this editorial today about why the preference of son is there in India. We had already focused, we have always focused that the preference of son is there and women inequality is there. But why? The reason why is discussed in today's editorial. Second, the floods and disaster management. As I said, the floods in the northern India, we will discuss in the upcoming video. So here is the time that today we are discussing about the flood and disaster management in detail. And then we are having the green washing. And at the last, yes, we will discuss Amir's question as well. I'm so sorry that in my previous one of the video, I forgot to give the question and I will rectify it in the coming section. Okay. So let's start with the discussion. As we know that yesterday, that means 11th of July 2023, there was a day which is popularly known as World Population Day. It is an annual event in which globally discussions are happened regarding the gender inequality, the population growth issues, the fertility issues, the reproductive issues. And in this today's editorial, the writer wants to say that when we're looking at the India's demographic journey, then how India has been in this journey from more population and to controlling that population coming to the low population, इस पूरी journey में how the citizens are impacted, especially how the life of women is impacted with this change in the demography of India. From independence to post-independence to current year 2020. If we talk about certain data, the population of India at the time of independence was around 340 million and now it is 1.4 billion. अब इसके आगे की जो भी मैं डेटा आपको यहाँ पे बता रही हूँ, please keep in mind that the writer wants to explain the vicious cycle because of which the sun preference is there in India. Correct? Now please focus. At the time of year 1941, the male life expectancy was 56 years only. That means the 50% बॉयज ऐसे थे जो कि 28 की उम्र तक जी पाते थे और उनके बाद उनकी डेथ हो जाती थी और आज की डेट में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 69 years है. दैट मीन्स 50% of the population could live up to age of 75 years. All right. So you all must be thinking it is a good news. हाँ हम लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है. दैट मीन्स वी आर मोर अवेयर, वी आर मोर हाइजीनिक, द मोर हेल्थ सेक्टर्स आर डेवलप्ड, infrastructure is there, the lifestyle has been changed. So it is a good news for us, is it? Yes. But with respect to women, is it a good news or not? We will have a look here. See, the decline in the mortality to parents by surprise who no longer needed to have four children to ensure that at least two would survive, causing the population growth and fertility decline to
2.1 in 2019. See, at the time of 1941, when the mortality rate was high, that means the rate of death was high. At that time, parents were thinking, the thought process of parents was to give or to produce more children. Suppose they are producing 10 children, so the probability that half of the children will die was certain, looking at the data. And that is the reason you must have heard examples from your grandparents and grandmothers that they had 11, they are having 11 siblings, 11 kids as the son and the daughters. But when you ask them, they will say, no, no, we had 15, three died, two died, right? So every old grandparent couple would be having certain examples from the rural area where the children died. But looking at today's situation, if I am the women, if I know that the probability or the mortality rate has been increased, that means I do not have to think to produce more children, that is 5 to 10 children, because I have a certainty that they will not die because of the multiple facilities. Yes, death could be there, but not at the rate which was happening in 1941. So this is a relief we could see here. But women's childhood, adulthood, and old age have been transformed over the course of demographic transition, sometimes in a positive way and sometimes in a negative way. How? Negative. So, a woman was having, see, when a woman was having four children, or let's suppose more than four children, the probability of getting a daughter of or the probability of not having a son was very rare, that is 6%. I hope I'm making some sense that what I want to say is कि जब mortality rate बहुत ज्यादा थी तब कपल्स बच्चे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे और उस टाइम पे जब बच्चे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे तो लड़का नहीं होगा इसकी प्रोबेबिलिटी कम थी क्योंकि अगर आप 5 बच्चे करोगे तो उसमें से एक तो लड़का होगा इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है लेकिन अभी जब मोर्टेलिटी रेट कम है डेथ की रेट कम है तो औरत जो बच्चा पैदा कर रही है या तो एक कर रही है या दो कर रही है तो उसका प्रोबेबिलिटी की सन होगा ही नहीं ठीक है उसका जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है द प्रोबेबिलिटी और द परसेंटेज like if I am the woman if I am producing 4 children so the probability of producing a son is more and the probability of not producing a son is really around 6%. But if I am a woman and if I'm producing only one or two children, that means the probability of not having a son is more, 25%, 30%. Getting my point? यानी कि ये जो सोशल नॉर्म्स है या फिर पेट्रीलोकल किनशिप पैटर्न से और द लैक ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी reinforce a preference for son. So as a result, what is happening? Being in the pressure of this patriarchal society, that after marriage, the women will go with her husband. So we need a son as a parent to stay with us. Financial security is there, the reason. The past rituals are there, like in our death, the son will be doing all the rituals. Correct? So these are certain reasons जिसकी वजह से अभी भी सन की जो प्रेफरेंस है वो हुई जाएगी इसको बहुत ही सिंपल आप इस तरह से कनेक्ट कीजिए if you will observe a lady at your home who is not working, I'm asking to observe, I'm asking to imagine a old age lady who is not working. And it is a general observation in India that a woman get married to her husband who is generally older than her, 2 years, 3 years, 5 years. So in that scenario, it is a common observation that husband की जो डेथ है वो पहले होती है as compared to women until unless कोई डिजीज का एंगल नहीं आ रहा है तो अब वो
वुमेन अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी पूरी लाइफ टाइम में अपने हस्बैंड पे डिपेंड, बट इन हर ओल्ड एज अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनका जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो चला जाता है, एंड इमोशनल सपोर्ट ऑल्सो चला जाता है। अब वो किनके साथ रह सकती है क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है? क्या वो अपनी डॉटर के पास रह सकती है? तो द पेट्रियार्कल सोसाइटी डजंट परमिट इट। तो क्या वो अपनी सन के साथ रह सकती है? यस। इसीलिए सन की प्रेफरेंस है कि हमको भाई बेटा तो चाहिए ही। तो एक विशियस साइकिल हो गया कि ये जो वुमेन है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, इसलिए वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी। अपने हस्बैंड के जाने के बाद में दिस लेडी वांट्स सन सो दैट वो अपने ओल्ड एज में किसी के साथ रह सके। So ultimately, if women will not work in the labor force participation, अगर women हिस्सा नहीं लेगी तो ये बहुत ही घटिया से vicious cycle का पार्ट बन जाएगी, where the women will be ultimately dependent on the son, and this is the reason for the son's preference. And as per a report that is the Human Development Survey, that 85% household head जो sorry 85% household है which are dependent on their son in their old age, and only 11% are dependent on their daughter. And वो 11% भी केस तब है कि सन है ही नहीं या और कोई सपोर्ट करने वाला है ही नहीं। Otherwise, if you have daughter and a son and you're giving two options, then in India still the preference is of son, right? So hence इस ये जो विश्व साइकिल की वजह से जो सन का प्रेफरेंस हो रहा है, यही रीजन है कि आज के टाइम पे द कपल हु वांट्स ओनली वन चाइल्ड और टू चाइल्ड गो फॉर द इलीगल सेक्स सिलेक्शन अबॉर्शन। क्योंकि सन प्रेफरेंस का मुद्दा तो अभी खत्म ही नहीं हुआ ना कि चाहे पहले आप 10 बच्चे कर रहे थे कि 5 बच्चे कर रहे थे, अभी आप दो कर रहे हो या एक कर रहे हो। अल्टीमेटली आप कमा नहीं रहे हो, आप उस विश्व साइकिल में फंसे हुए हो। ठीक है, और आपको फिर सन प्रेफरेंस चाहिए। तो इस एडिटोरियल के साथ राइटर ये कहना चाह रहे हैं दैट वुमेन शुड इनकलकेट हर लाइफ इन एजुकेशन, करियर, जॉब, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड प्रोड्यूस लेस चिल्ड्रन सो दैट शी कैन फोकस मोर ऑन हर करियर, एंड अल्टीमेटली वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगी, नॉट ऑन द हस्बैंड, एंड एज अ रिजल्ट नो प्रेफरेंस फॉर सन वुड बी देयर। So consequently, the numbers like 96 to 95 among the 100 boys. So with fertility decline, active mothering occupies a small proportion of women's life. Because as I said, motherhood and career are parallel. At the age of 25, 28, when there is a time to build your career, this is the age of your fertility. The people say that your biological clock is ticking. Again, at the post age of 30, when you want to grow in your career, your children will grow. उनका ध्यान कौन रखेगा? Then 35 to 34, more higher in the career, teenage will come of your side, more focus. So motherhood और career हमेशा से दुश्मन है. Not possible that you produce 4 children and work simultaneously. Correct? तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे आई थिंक जो एडिटोरियल उसके थ्रू वुमेन ये जो है आपके पास राइटर है वो बोलना चाह रही थी, प्रोड्यूस लेस चिल्ड्रन, फोकस ऑन योर करियर, participate in the labor force and work, right? So these changes are only partly accompanied by changes in thoughts of the women. कैसे? Women का जो एजुकेशन अटेनमेंट है वो बढ़ गया है। 70% गर्ल्स अभी भी सेकेंडरी एजुकेशन में जा रही है, लेकिन अभी भी अर्ली मैरिज हो रही। बच्चा करने की उम्र आज भी मोस्टली कितनी है? पहले 20 साल के अंदर बच्चे हो जाते थे, अभी 22 है, 25। अब ये मत बोलना कि नो 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 आजकल से 27-30 तक हो। दैट इज द रेयर पार्ट, दैट इज इन द मेट्रो सिटी। इंडिया की पॉपुलेशन मोर देन 50% इज इन द रूरल एरिया। ओके, लाइक नो मैटर हाउ रिच फैमिली से आप बिलोंग करते हो, इंडिया में 70% रूरल 70% हाउस होल्ड विल से दैट इट्स टाइम टू हैव अ चाइल्ड, योर बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग।
All right. So this is kind of a trap. So the average age at the first birth has hardly birth for 20 years. 1940s के टाइम पे बच्चा पैदा करने की एवरेज एज 20 है और 1980s में जो एवरेज एज है वो 22 है, तो कुछ भारी चीज नहीं हुआ है. Early motherhood perhaps explain why lower fertility does not translate into higher labor force participation for women. Women का लेबर फोर्स में हायर पार्टिसिपेशन रेट क्यों नहीं है? इसका कारण है अर्ली मदरहुड. जिस एज में you should focus on your career to develop your skills, उस एज में if you are becoming a mother, that means you have wasted the important years of life, 4 to 6 years. And at the end, you get the job जिसमें skills की requirement नहीं है, like unskilled jobs, lower jobs. See, emotional tap in India is like your biological clock is ticking, so you should produce a child right now. Then 2 years you will waste the time in that. All right. So see, I want to clear I'm not against the motherhood. I'm just decoding this editorial, the views of the writer, and how the women are not participating in the labor force. So coming back to the topic, as per this editorial, you will be, inculcating your important 2 years of life for the initial years in the motherhood. Then again, you will feel that second child is important. They are not getting company. So ultimately, after wasting 4 to 5 years, you will not get the skill job because that was the time when you could have built the skills. So by the time the peak children demands end, they have missed the window for occupations and require the specific skills. Now, effects on the old age, we have discussed कर चुके हैं कि why in old age women are dependent on their son. So harnessing the gender divide, enhancing the women's access to the employment and asset will reduce the reliance on the son. Effort to improve women's labor force participation must accompany to the safe and affordable childcare. I hope this topic is clear. Now you can accumulate all the information on the women from the multiple videos or the multiple editorials which are coming in this month, and you can jot it down in a single page as a topic women. It will be useful for your essay writing, as women is the topic which you must prepare for the essay writing, and you can also use for the social issues, GS paper 1 and GS paper 2. You don't have to read extra books. These are the information or the content you are getting from the newspaper. Now, coming to our second topic, flood and disaster management. It was very blunder, एक बहुत ही sad moment था when we are all, we are facing the flood in the North India. वीडियोस देख के काफी लोग डर गए होंगे. It was a video जो कि हिस्ट्री में बहुत कम ऐसा देखा गया. The floods are in Chandigarh, floods are in Delhi, floods are in the Himachal Pradesh. Himachal Pradesh, the condition is like the houses are getting destroyed, buildings are falling. चंडीगढ़ में इवन जो रोड है वो सेपरेट हो चुकी है. So this is a result of the heavy rainfall, the floods, the landslides. So before going to look at the data that where the floods occurred and all, we should understand one thing, that the situation which is happening or which happened in the recent time in Himachal Pradesh, Chandigarh and Delhi, they are interlinked. How? Firstly, heavy rain, then landslide, then blockage. How? We'll have a look at this. These topics are ultimately interlinked. So the areas are Himachal Pradesh, Delhi, and Chandigarh. So if you want to see with the help of a map, look in this map. This area, that is the Gangetic Plain area or the Himalayan region. Here you will see that Himachal Pradesh is there, Delhi is here, and Chandigarh is somewhere here. So this complete Himalayan region
or the Gangetic Plain region is suffering from the heavy rain currently, enhanced floods and landslides. तो पहले इस टॉपिक को हम देखेंगे as disaster management. Then we'll also link it as with respect to the geography and environment, that is climate change. Okay. First of all, what is disaster? Disaster is any catastrophic event where there is a large scale loss of the human life, serious damage to infrastructure, public places, and also they can cause damage to the environment as well. Now, I want to make one thing clear that hazards, see, heavy rain is hazard. All right, heavy rain is hazard. There are regions which are naturally prone to hazards. For example, there are regions which are prone to earthquakes. There are regions which are prone to the heavy rain because of their geographical region. But if these hazards are in the areas which are not habited, like these are inhabited areas जहाँ कोई रह नहीं रहा, तो वहाँ कोई mass destruction आपको नहीं दिखेगा, तो वो disaster नहीं कहलाएगा. But hazard ऐसी जगह हो रहा है where you see a large scale loss of human life, infrastructure को damage हो रहा है, public places, environment को damage हो रहा है. That means in the habited places. So we call it as a disaster. Disaster. So that means firstly there was a condition of hazard and it turned into a disaster. And this disaster basically, or this hazard could result in multiple disasters actually, not only the one disaster. हैवी रेन जो है जो कि एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, तो दैट मीन्स हैवी रेन अभी करंट जो न्यूज है उसके कंटेक्स्ट में क्या हो गया, एक हजार्ड हो गया, could lead to a secondary and tertiary disaster such as flood. And because of this heavy rain, आपके आपके देखने को मिलता है फ्लड और हमने भी देखा लैंडस्लाइड. So that means a hazard can lead to a disaster, a primary or a secondary disaster. कैसे, अब इसको समझते हैं. पहली बात तो जो करंट सिचुएशन है, इट इज मोर ऑफ लाइक अ मेट्रोलॉजिकल हजार्ड ट्रिगरिंग द हाइड्रोलॉजिकल हजार्ड. कैसे, हजार्ड इज अ पोटेंशियल इवेंट व्हिच कुड पोटेंशियली ट्रिगर अ डिजास्टर. ये भी हमने समझा. When a hazard meets with exposure and vulnerability, then it's a disaster. We already learned this. तो डायरेक्ट कनेक्शन है फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड. कैसे है वो हम देखते हैं अब यहाँ पे. प्लीज फोकस हियर. So this is the map of India. I hope it is clearly visible to everyone. Sorry for the lack of space. This is the Himalayan region. I am assuming that you all know about the physiography of India, the chapter 1 of NCERT geography. If not, you can follow our lectures on the geography which are coming soon. Okay, so this is the Himalayan region. If I talk about Himalaya, they are newly formed young mountains which are unstable, they are still moving, they are very fragile. और इन एरियाज में आपको सिर्फ वैली जैसे स्ट्रक्चर भी मिलेगा. वैली मतलब कि पहाड़ के बीच में से एक हल्की सी गली जैसी निकल जाती है जहाँ से रिवर पास हो रही होती है, तो वहां से जो पानी है रिवर का वो भी बहुत फास्ट वेलोसिटी से आ रहा है. ठीक है, तो अब इन माउंटेन्स में क्या होता है, पहला तो है कि ये ऑलरेडी फ्रॉम द हजार्डस रीजन को लेके, बिकॉज दिस रीजन इज हजार्डस. यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि हेवी रेन होती है. द रीजन कुड बी मेनी. इफ यू टॉक अबाउट की सडन जो ग्लेशियल मेल्टिंग है वो बहुत फास्ट हो गई है जो कि रिवर की सोर्सेस है, या फिर क्लाउड बर्स्ट हो गया है, या अभी जो साइक्लोनिक एक्टिविटीज देखने को मिली है उसकी वजह से मानसून डिले हुआ एंड ऑल ऑफ सडन बाद में क्लाउड बर्स्ट हो गया. So there could be multiple reasons because of this heavy rain. And अगर मैं heavy rain के बारे में बात करती हूँ, तो अगर ये कोई माउंटेन एरिया है, तो ये जो स्लोप वाला एरिया है यहाँ पे,
तो यहाँ से आ रही है आपके पास हैवी रेन जो कि हमेशा आती है, ठीक है। अब ये स्लोप वाला एरिया है, यहाँ पे आपको वेजिटेशन दिखेगा, यानी कि पेड़ पौधे, और एक चीज है यहाँ पे सॉइल। वेजिटेशन का काम होता है टू अरेस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि जब बहुत ही फुल वेलोसिटी से पानी आ रहा है उसको रोकने का, बैरियर का काम करता है ये बड़े बड़े पेड़, जंगल, फॉरेस्ट, वेजिटेशन। बट बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, the developmental activities for the economic growth, इन स्लोप वाले जो एरिया है वहां हमें देखने को मिलता है डेन्यूडेशन। मतलब ये माउंटेन वाले जो एरिया है, नाउ हियर वी कैन नॉट सी द इनफ अमाउंट ऑफ वेजिटेशन जो इस फास्ट वेलोसिटी ऑफ वाटर को रोक पाए। एज अ रिजल्ट ये पानी के साथ अब ये जो सॉइल है वो पूरी सेचुरेटेड हो चुकी है, ये होल्ड नहीं कर पा रही है, और ये पूरा ये जो मिट्टी का टीला बोल सकते हैं या फिर आप रॉक डेब्री बोल दो उसको, सॉइल का पूरा एक स्ट्रक्चर बोल दो, वो बह के आगे आ जाता है। इसको हम बोलते हैं लैंड स्लाइड, ठीक है। तो पहले हुई हैवी रेन, हैवी रेन की वजह से हुआ आपके पास लैंड स्लाइड। अब ये जब मिट्टी का डेब्री आगे आया तो दिस वॉज द माउंटेन। पहला देखो स्टेप, देखो फर्स्ट स्टेप इज यहाँ पे हुआ हैवी रेन। As a part of heavy rain, the soil due to the denudation of the slopy area, यहाँ पे देखने को मिला कि भाई लैंडस्लाइड हो गया। अब ये लैंडस्लाइड जो यानी कि पूरा इतना बड़ा मिट्टी का टीला है, जंगल में कटे हुए पेड़ है, जो वीडियोस में आपने पक्का देखा होगा कि जंगल के इतने बड़े कटे हुए पेड़ जो है पानी के साथ तालाब की तरह बहता हुआ आगे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्लोप के आगे जाके रुक जाएगा। तो वो रुक जाएगा तो एक डैम जैसे स्ट्रक्चर बना लेगा, एक नेचुरल एक बैरियर बन जाएगा। मतलब यहाँ पे तो स्लोप है वो नहीं रुक पाया और लैंडस्लाइड हुआ, वो आगे खसकता गया, जहां उसको स्लोप नहीं मिला, जहां उसको फोर्स नहीं मिला, वो वहां आके रुक जाएगा। तो एक नेचुरल बैरियर क्रिएट हो गया। एंड एज अ रिजल्ट जब ये वैली वाली एरिया में एक बैरियर क्रिएट हो गया, तो अब इसने क्या किया, उल्टा इफेक्ट कर दिया कि अब इस पानी को वापस, पहले तो ये पानी को रोक नहीं पा रहा था, अब ये पानी को रोक पा रहा है बिकॉज इट बिकेम अ बैरियर। और यहाँ पे पानी अब जो है वो अक्यूमुलेट हो जाएगा, दैट इज वाटर अक्यूमुलेशन। और ये वाटर अक्यूमुलेशन होने के बाद में वी सी की लिड टू द फ्लड, क्योंकि एक टाइम आएगा कि पानी जो है, जैसे डैम नहीं होता कि डैम पूरा भर जाता है तो बाहर को निकलेगा, तो जब तक होल्ड कर पा रहा है ठीक है, फिर पानी जो है फुल स्पीड से निकलेगा, वो फ्लड होगा। फिर ये फ्लड होगा तो पानी तेज कहाँ से आएगा, और ये आपके पास लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड से आपके पास वाटर अक्यूमुलेशन और फ्लड। ये हुआ है करंट सिचुएशन। आई होप सबको क्लियर है। प्लीज कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका जो ज्योग्राफी है उसमें जब आप पूरा क्लाइमेटोलॉजी करोगे और मॉनसून पढ़ोगे, पानी जो आप रिवर्सल ऑफ विंड्स वगैरह पढ़ोगे, तो उसको आप डिजास्टर मैनेजमेंट से कैसे कनेक्ट करोगे, फॉर दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट। So we can see here, Himalayas are the young cold mountains, unstable, steep valleys where water flows at great velocity. Heavy rain in such a vulnerable increases the velocity of surface runoff due to the slope. Water landslide. देखो schematic diagram के थ्रू अभी हमने समझ लिया. Now we are reading it with a language. A landslide is defined as the sudden movement of a mass of rock, debris, or the earth down a slope. It is triggered by a specific event such as heavy rainfall, earthquake, a slope cut to build a road and many others. अब रीजंस जो है लैंडस्लाइड के, हमने देखा कि वेजिटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती फॉर अरेस्टिंग द वाटर, बट ड्यू टू डेन्यूडेशन अकर्ड विद द हेल्प ऑफ डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो डेन्यूडेशन हुआ है उसकी वजह से सॉइल सेचुरेटेड हो जाती है और वो वेजिटेशन को होल्ड नहीं कर पा रही है। एज अ रिजल्ट पूरा वो डेब्री आगे खसक जाता है, दैट इज योर लैंडस्लाइड। So deforestation causes degradation of the slope, weakening of the structure and integrity of the soil.
Top layer of the soil could get saturated with the water, and entire rocky material could slide down under the influence of gravity. This sudden shifting of earth material is known as landslide. अब लैंडस्लाइड जो है उसके अदर रीजन क्या हो सकते हैं, जो कि अभी हमने देखा कि वो खुद एक बैरियर बन के आ रहा है. तो लैंडस्लाइड फॉर्म अ नेचुरल डैम. डैम मतलब कि वो एक बैरियर बना लिया क्योंकि अब उसको स्लोप नहीं मिल पा रहा है आगे खसकने के लिए. इट स्टॉप द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर इन द वैली एरिया, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाता है. ब्लॉकेज हुआ तो पानी इकट्ठा होगा और कहीं ना कहीं फिर वो आगे जाके टूटेगा और मैसिव डिस्ट्रक्शन होगा. और ये मैसिव डिस्ट्रक्शन और ज्यादा एग्रोवेट हो सकता है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एनक्रोचमेंट. एंड अगर हम इस तरीके की डिजास्टर के बारे में बात करेंगे तो इंडिया इज द मोस्ट वल्नरेबल. डेटा देखोगे तो आप केदारनाथ जो है आपके पास सारा अली खान की एक मूवी है एंड सुशांत सिंह राजपूत जी, द लेट सुशांत सिंह राजपूत जी, उनकी एक मूवी है द केदारनाथ ट्रेजेडी. उसमें आप अच्छे से देख पाओगे कि किस तरह से पूरी तरह से वो जगह को तबाह कर दिया. द फ्लड सिचुएशन जो कि हुई थी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स के, Chamoli disaster of 2021. Now, how we can control this disaster? So this comes under the topic of disaster management. Very important, this entire framework. It was done or developed by United Nations. It is a program of disaster risk reduction. और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वही प्रिंसिपल्स हमने हमारी इंडिया के लोकल प्रोग्राम में ऐड किए, दैट इज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान. ओके. लेकिन अब आज का पेपर में क्या आता है कि ये जो एक्सट्रीम वेदर हमको दिखा है, एक्सट्रीम वेदर का मतलब हैवी रेन, जो कि हजार्डस सिचुएशन थी जिसके वजह से मल्टीपल डिजास्टर्स हुए हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड हुआ है या फिर फ्लड हुआ है. तो ये जो हैवी रेन है इसके लिए या फिर कुछ भी हो उसके लिए हमेशा क्लाइमेट चेंज को ब्लेम करने की जरूरत नहीं, ये राइटर कहते हैं. और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि इस बार साइक्लोनिक एक्टिविटी दिखी थी अरेबियन सी के अंदर. गुजरात में दिखा था आपको साइक्लोन, द बिपरजॉय साइक्लोन अरेबियन सी का. So due to excess warming of this Arabian Sea, monsoon was delayed in India, and as a result, it is a possibility that due to delay in this monsoon, the moisturous wind got accumulated and they burst out suddenly as a heavy rain. और the effect of El Nino also can be seen. देखो El Nino एक ग्लोबल फिनोमेना है. इसमें क्या होता है कि जो पैसिफिक कोस्ट वाला एरिया होता है वो वार्मर हो जाता है और उसका पूरा इम्पैक्ट इंडिया के मॉनसून पे आता है. यहाँ पे ड्रॉट कंडीशन हो जाती है और उसका उल्टा है ला नीना. ये हम क्लाइमेट में डिटेल में पढ़ेंगे. देन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक और फैक्टर हो सकता है. लोकलाइज चेंजेस. देखो हिमाचल प्रदेश में कुछ रीजन है जहाँ फ्लड आ रहा है और कुछ रीजन है जहाँ गर्मी भी देखने को मिल रही है. तो कुछ लोकलाइज रीजन लोकलाइज सिचुएशंस पे हमेशा क्लाइमेट चेंज नहीं होता है सर. तो हमको एक बेटर फोरकास्टिंग की जरूरत. कंक्लूजन, डिजास्टर मैनेजमेंट को आप एक इमरजेंसी प्रोविजन के तौर पर ना देखें. या आपका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म में आपको इसे मेन स्ट्रीम गवर्नेंस के फॉर्म में इसको यूज करना चाहिए. मेक फॉलो अप विद डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल. नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट. ये भी हमने कल किया था बट आज इसमें और कुछ अच्छे पॉइंट्स थे तो आई थॉट की कवर इट अप. ये टॉपिक है आपके पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. इसको लेके अमेंडमेंट बिल आ रहा है. पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन है उसमें, एंड इट विल स्टार्ट एट 20th of July 20 July. बट अभी से ही इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हो गई जिसकी वजह से दिस बिल हैज बीन सेंट टू अ जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट फॉर द रिव्यू. So what is this concern? What is this issue? In India, economic growth versus ecological conservation, इसके बीच में जो स्ट्रगल है और जो टक्कर है या फिर किसको फोकस प्रायोरिटी देनी चाहिए वो हमेशा से रही और वाजिब भी है. बिकॉज
इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करोगे तो अल्टीमेटली लोग सफर करेंगे, क्योंकि पीपल आर डाइंग कि हमारे पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, खाना कहाँ से खाए, पॉवर्टी है, हंगर है, तो ग्रोथ तो करवाना पड़ेगा सरकार। और अगर आप इकोलॉजिकल कंजर्वेशन पे ध्यान नहीं दे रहे तो अल्टीमेटली फिर अर्थ अपने हिसाब से ह्यूमन के वेलबींग को खतरा कर रही है, जैसे नॉर्थ इंडिया के सेंटर में हमने देखा ही। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और दिस इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, किस पे फोकस होना चाहिए, वो आज का डिस्कशन है। दैट इकोनॉमिक ग्रोथ एनी हाउ रिक्वायर्स एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर आपको ग्रोथ करवानी है तो आपको जॉब देनी है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो आपको जंगल काटने पड़ेंगे, आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, आपको रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। और दोनों ही का एम क्या है, इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए। तो सोल्यूशन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, दैट ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड को पूरी करे, ठीक है। सच डेवलपमेंट विच फुलफिल द प्रेजेंट जनरेशन नीड without compromising the future generation. What is sustainable development? It is such development in which we fulfill the present generation's needs without compromising the future generation. महात्मा गांधी का एक कोटेशन है, आई थिंक इट्स इन द एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी 9th स्टैंडर्ड, आई रिमेंबर फ्रॉम माय स्कूल डेज, दैट देयर इज इनफ on the earth for everyone's need, but not for anyone's greed. सबको कितनी चीजों की जरूरत है वो अर्थ पे उतनी रिसोर्सेस है, लेकिन किसी एक इंसान का भी लालच का सोल्यूशन नहीं है, उतने रिसोर्सेस नहीं है। ओके, so there is, again I'm quoting it, you can use it in essay writing, that there is enough for everyone's need but not for anyone's greed. So the solution is the sustainable development, where we go for the balance between the economic growth and ecological contribution. So what is if this is wrong? This is 1980. I think we dismissed that. तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो है ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन आया क्यों था। देखो, हम कॉलोनियल लॉज की अगर बात करते हैं तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के नाम पे उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए लॉज बना रखे थे, जिसमें उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था दैट यू कैन नॉट यूज दीज रिसोर्सेज, और ब्रिटिशर्स खुद एक्सप्लॉइट करते थे फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। टी कल्टीवेशन हो गया, रेलवे कंस्ट्रक्शन हो गया, टिम्बर हो गया, मैनी थिंग्स, to protect their own commercial interests. But post independence, these were changed, and as a result, to protect the forest, the Forest Conservation Act of 1980 was brought in the picture. And key objectives were, सबसे important था कि जो forest land है उसको protect करना, to go for the non-forest areas, biodiversity protect करना। और एक advisory committee बनाई गई थी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करती थी, एडवाइस करती थी। इन दिस एक्ट सेंट्रल, देखो सबसे पहली चीज ये समझे कि जो फॉरेस्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, दैट मीन्स सेंटर और स्टेट दोनों के पास अथॉरिटी होती है, लेकिन फिर भी इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर था, मैं तो कहूँगी ऑलमोस्ट सारा पावर था, जिसकी वजह से ये स्टेट गवर्नमेंट या बाकी अथॉरिटीज को कंट्रोल कर सकती थी विद रिस्पेक्ट टू द डिसीजंस ऑफ मैनेजिंग द फॉरेस्ट लैंड। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे कर्व किया इसमें, तो सेंटर जो है रेगुलेट कर सकती थी, पनिशमेंट ला सकती थी, कॉस्ट लगा सकती थी। अब जो मेन डिफरेंस है ना, जिसकी वजह से अभी मुद्दा है, आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि इस एक्ट के अंदर जो फॉरेस्ट कवर थे वो शुरुआत में सिर्फ नोटिफाइड फॉरेस्ट थे, यानी कि वो फॉरेस्ट जो कि सिर्फ रिकॉर्डेड है। लेकिन एक फेमस केस आया तमिलनाडु का गोदवर्मन तिरुमलपड़ केस ऑफ 1996। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिकॉर्डेड या फिर नोटिफाइड फॉरेस्ट नहीं सर, जो नॉन ऑफिशियली एरिया थे जिसको हमने फॉरेस्ट के तौर पे क्लासिफाई नहीं किया है, उसको भी आप इसके अंदर इंक्लूड करोगे, राइट। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थे, इतना कुछ प्रोविजन के बावजूद कोई खास फॉरेस्ट कवर जो है इंक्रीज नहीं हुआ है एज पर द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इंडिया कहता है कि 33% जो है हम इंक्रीज कर देंगे एरिया बाय 2030, और कार्बन सिंक जो है 2.5 बिलियन से 3 बिलियन टन की आएंगे बाय 2030 एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट। और अभी जो अमेंडमेंट आया है जिसकी वजह से मुद्दा है,
वो सिर्फ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के बारे में बात करता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उस वक्त था टू ब्रॉडन द डेफिनेशन ऑफ द फॉरेस्ट, वो बिल्कुल रिवर्ट हो गया है यहाँ पे, और स्टेट गवर्नमेंट के पास से जो पावर्स है वो और कम हो गई. So this is all about that why the issues are there. Coming to the main question, again 250 words, and this question is for 20 marks this time. And जिन भी स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर सबमिट किए, कॉमन remark to all of them, please write in the pointers rather than writing in an essay format. Second, add some factual information and use creative diagrams to score more. Okay. So today's question is, discuss about the vulnerability of India to the flood and the landslide related hazards. Give example including the salient features of the major disasters caused by earthquakes in different parts of India during the last 3 decades. So that's it for today. I hope you are understanding the editorials of the newspaper in a very crystal and clear manner. So if you're liking it, please subscribe our channel, like and share. We'll keep supporting you, we'll keep mentoring you. Thank you so much.